The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 2nd Canto, 3rd Chapter, text number 23, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on June 20th, 1972, in Los Angeles. Time we receive the dust of the feet of a pure devotee of the Lord upon his head, certainly it is a dead body. And the person who has never experienced the flavor of the tulsi leaf from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. So, Prahlad Maharaj was asked by his father, how did you develop this Krishna consciousness? So he replied that Naishang Matisthavadu Kramangini, this Krishna consciousness cannot be developed Prishat the anartha upasamojana. Krishna consciousness, development of Krishna consciousness means anartha upasama. Anartha means things we do not require. Artha, anartha. Artha means which is essentially required. And anartha means which is not required, artificially we have requisition. So, when one grows his Krishna consciousness, immediately his artificial life becomes finished. Bhakti parashanubhava virakti annatasya. This is the symptom of development of Krishna consciousness, that he is not anymore interested for material, unnecessary things. This is the test. If one is increasing Krishna consciousness, at the same time he has got full attachment for material things, that means he is not developed. Material things means ahara nidra vayamaipinancha, eating, sleeping, mating, and defending. So, sometimes the karmis are afraid of this Krishna consciousness movement because they know that as soon as one becomes Krishna conscious, he is no more interested with this material. We say, don't eat meat. All people become Krishna conscious and give up meat eating, then the slaughterhouse will be closed automatically. We say no meat eating and no intoxication. So if all people become Krishna conscious and give up drinking and smoking, the big business, breweries and cigarette manufacturers will be closed. Similarly, no illicit sex. If people take to Krishna consciousness, then so many brothels and clubs and nudies and everything will be closed. So they are afraid of their business. Therefore they don't encourage this movement. Because ultimately this movement goes on, then where they stand? Everywhere we go, the advertisement is for intoxication, for sex, and for meat eating. These are the advertisements. Business is going on very nice. But Krishna consciousness means virakti annatasya. If one
takes Krishna consciousness like the dust of a pure devotee. If he takes the dust of the lotus feet of a pure devotee, immediately he becomes free from all these unnecessary demands. Naishamati stavaduru kramansin pishattana thopajado jadatha niskinchananam naishamati stavaduru pado mahiyasana padura yogisekam. Krishna consciousness cannot be developed unless one takes the dust of the lotus feet of a pure devotee. This was Prahlad Maharaj's remark. In other words, unless one comes in contact with a pure devotee, Krishna consciousness cannot be developed. That is not possible. Therefore, here it is recommended by Srila Swami that Jivan chavo bhagavatam videnu najatumattu vilaveta dastu. Renu is dust. If one does not try to secure the dust of the lotus feet of Bhagavata. Bhagavata means pure devotee of the Lord. One Bhagavata is this book Bhagavata, another Bhagavata is person who lives on the book Bhagavata. He is person Bhagavata. Two kinds of Bhagavata. So we have to learn Bhagavatam from the living Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu's secretary, Swarup Damodar, he advised one Brahmin. One Brahmana wrote something about our Chaitanya Mahaprabhu. There are many poets and writers who used to come and visit Chaitanya Mahaprabhu when he was at Jagannath Puri, and they would present some writings, but these writings would not be presented before Chaitanya Mahaprabhu unless it was sanctioned by his secretary, Swarup Damodar. That was the system. So, one Brahmana, he wrote one poetry that the purport of the poetry was that Jagannath is Krishna, but he cannot move, he is wooden Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu is also Krishna, but he is moving Krishna. That means he distinguishes between Jagannath and Chaitanya Mahaprabhu. So this is not Siddhanta, this is not conclusion of the Shastra. Shastra conclusion is the deity and Krishna the same. There is no difference. We have many times explained this. Deity, the worshipful deity in the temple, is not different from Krishna. So, Swarup Damodar did not approve of the poet to be presented to the Chaitanya Mahaprabhu. At that time, he chastised that you do not know the conclusion and you dare to write some poetry. Don't do this. And he said, Bhagavata param yaha Bhagavata. If you want to understand Srimad Bhagavatam, then you go and study Srimad Bhagavatam from the pure devotees. Then you will understand.
Otherwise, he'll write all this nonsense. Bhagavata Paradiya Bhagavata. So one Bhagavat, the two Bhagavat. You study Srimad Bhagavatam from living Bhagavat. So, if one does not take or does not surrender unto the living Bhagavatam, he cannot understand Srimad Bhagavatam. Many scholarly, learned scholars, Sanskrit scholars, they cannot understand Bhagavatam. I have seen many scholars. They cannot understand Bhagavatam. Sanskrit scholars, they will read, but they will not be able to understand. Similarly, Bhagavad Gita also. If anyone studies Bhagavad Gita from scholarly point of view, ABCD, he will not understand. Krishna therefore said that, Arjuna, I shall speak the lessons of Bhagavata to you because you are my very dear friend and you are my devotee. Krishna did not want to speak Srimad Bhagavad Gita to a scholarly student. No. These books are not to be understood by mundane scholarship. That is not possible. All the Vedic are. There is a big commentary on Bhagavad Gita by a great scholar and political leader, Lokmanya Tilak. So, one of his devotee is also a politician when I was in London, 1968. So he has got a society there, preaching the Tilak's political view like that. He has gotten. So he came to see me and he was very much eulogizing Lokmanya Tilak, that he has written his big commentary, Karma Yoga. So he wanted to invite me in talk on Tilak's great task. So I told him that Tilak does not understand Bhagavad Gita. So immediately he was surprised. Then we had a talk and I convinced him that Tilak was a politician, maybe a big scholar, but that does not mean he can understand Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is understood by devotee. He may be illiterate, it doesn't matter. Still, as Chaitanya Mahaprabhu sacrificed the illiterate Brahmin who was reading Bhagavad Gita in Ranganath temple, you know the story. The Brahmin was illiterate. His guru ordered him that you read Bhagavad Gita daily, 18 chapters. So he could not refuse the order of Guru Maharaj. So he was taking the book and simply saying. So those who knew that he was illiterate, they were criticizing. Well, Brahmin, how are you reading Bhagavad Gita? He could not answer because he knew that I am illiterate, I do not know. Chaitanya Mahaprabhu saw this fun and approached him. Well, Brahmin, what you are reading? So he could understand that this Chaitanya Mahaprabhu has not come to criticize him, he is serious. So he informed me, sir, I am reading Bhagavad Gita, but I am illiterate. I am illiterate, but my spiritual master has ordered to read. So what can I do? I have taken this book and moving these pages, that's all. What can I do? Actually, I cannot read. Then Chaitanya Mahaprabhu inquired,
But I see you are sometimes crying. Yes, sir, I sometimes cry. Why? That because as soon as I take this book in my hand and I see the picture that Lord Krishna is driving the chariot of Arjuna, I cry. Krishna is so kind that he has taken the service of his devotee. He should have been seated on the chariot, Arjuna should have driven the chariot, but he is driving the chariot and Arjuna is sitting on the seat. So Krishna is so kind and beloved that he can serve his devotee. It is the duty of the devotee to serve him, but he is so kind and affectionate that he serves his devotee. So as soon as I think of this Krishna's magnanimity, I cry. Then immediately Chaitanya Mahaprabhu embraced that your reading of Bhagavad Gita is perfect. Because you have understood the essence of the Bhagavad Gita. The scholars, they will say, when Krishna says, Manvana bhava madbhakta madhyayimam namastu, a scholar will say, it is not to Krishna the person, it is to the impersonal Brahma which is within it. They cannot conceive that the Supreme Absolute Truth can become a person. They cannot conceive. Such a huge cosmic manifestation is created by a person like us, resembling like us, two hands, two legs. Their poor brain cannot accomplish. Param bhavam ajanam. Avajananti mana mudha manasim tanumasi. That is stated in Bhagavad Gita. Mudha, fools and rascals. Avajananti, deride at me, thinking me as ordinary man. Param bhavam ajanam. He does not know what is the transcendental potency behind it. Param bhavam ajanam. So, the Mayavadis and poor fund of knowledge, they cannot understand Krishna unless he becomes a devotee. And how he can become a devotee, and that is stated. Bhagavatam Kirenu, one has to surrender himself to his integrity. Bhagavat. Bhagavat means God is called Bhagavan. Bhagavat, the original word is Bhagavat. And one who has got intimate relation with Bhagavat, he is called Bhagavat. So here it is recommended. Bhagavatam Gridin Najatu. Matto means one who will die. Every one of us will die. But abhilavetavat jastu. But we can achieve a great success. Although this body is mortal, we can achieve a great success. And what is that? To take the dust of the lotus feet of a Bhava. Simple. Therefore it is said, Jivan chavo bhagavatanjirenu najatumastu bilaveta jastu. After all, this body is dead, everyone knows. It is simply moving on account of the presence of the spirit soul. As soon as the spirit soul is out of this body, out of this bag,
of flesh and bone. We are so much attached to this bag of flesh and bone. But those who are learned, they know that this body is nothing but flesh and bone. The real person, the real force is the soul. Just Jnata Buddhi Kunapi Tidhati, the bag of bones and flesh. This is not our identification. I am not this body. Do you think if you take some bones and flesh, accumulate them and bundle them, will they produce an intelligence? If I am this body, then this body means a bundle of flesh and bones. Flesh and bones can be had outside. The scientists can take them and bind them together and then see that it is coming. Scientist, another scientist, Professor Einstein, is coming from the bones and the flesh. Is it possible? It is not possible. The bones and flesh are bones and flesh. The real identity is the soul. According to his karma, he manifests his intelligence. Although this intelligence is coming out through these bones and flesh. Just like I am seeing through this glass, that does not mean the glass is seeing. The seeing power is different from the glass. Similarly, those who are thinking that they are this body, under bodily concept of life, just Jashyātma buddhi kunapeti dhātuhi sadhik kalatrādishu bhavamayajati jat tīrtha buddhi salilena karhichi janesu avijñesu saiva gokhara. Bhagavad says, one who accepts his body as itself is no better than the cow and the ass. Foolish animal. I have several times explained why ass is called foolish, why cow is also foolish. Simple, cow is simple, cow is... So, they are compared with animals, one who accepts. Therefore, this body continues to be animal body or dead body unless in the human form of life one takes advantage of touching the dust of the lotus feet of a devotee. Jivan chavo bhagavatam hrideno najat makto vilaveta jatu. Sri Vishnu Padya Manujasturasya Tasan Chabo Jastu Navida Gandham. The nostril, the smell. So, our Krishna consciousness smelling means we should offer all nice flowers and tulsi on the lotus feet of the Lord. And we shall accept prasadam. The priest will offer. And if we smell that, then our smelling power is fulfilled. That means these Kumaras, Chatushan Kumar, son of Kumara, they are first of all impersonal. But after smelling this tulsi leaf, which are offered to the lotus feet of Vishnu, they become personal. So, this is an opportunity. If anyone comes, smells the flowers and the
Tulsi offered to Vishnu, taste the Vishnu Prasada, seized the Lord, all. In this way, he develops Krishna consciousness. So this is opportunity. This temple means an opportunity, a process, a simple process, not simple for ordinary man, but actually it is simple. Anyone can smell the flowers offered to Krishna, anyone can eat the foodstuff offered to Krishna, anyone can see the deity so nicely decorated, anyone can hear Hare Krishna mantra. So we have got the senses. See, if we engage our senses in this way, our seeing power, our hearing power, our talking power, our smelling power, our touching power, our tasting power, in this way, if we engage everything in connection with Krishna, very easily we become Krishna conscious. And as soon as we become Krishna conscious, then our life is successful. We become liberated from this bondage of birth and death. So, this is the problem. Now, According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the breathing dead body is a ghost. When a man dies, he is called dead, but when he again appears in a subtle form, not visible to the present vision, and yet acts, such a dead body is called a ghost. Ghosts are always very bad elements, always creating a fearful situation for others. Similarly, the ghost-like non-devotees, who have no respect for the pure devotee, nor for the Vishnu deity in the temple, create a fearful situation for the devotees at all times. The Lord never accepts any offering by such impure ghosts. There is a common saying that one should first love the dog of the beloved before one shows any loving sentiment for the beloved. The stage of a pure devotee is attained by sincerely serving a pure devotee of the Lord. The first condition of devotional service of the Lord is therefore to be a servant of a pure devotee, and this condition is fulfilled by the statement, reception of the dust of the lotus feet of a pure devotee who also served another pure devotee. That is the way to pure disciplic succession or devotional parampara. Maharaj Rahugana inquired from the great saint Jad Bharata as to how he attained such a liberated stage of a Paramahamsa, and in answer the great saint replied as follows: Rahuganai tat tapasana jatiya chejaya nivapana grahadva nachandasana vajaladi surya vinamahatpada vajobhishekam. O King Rahugana, the perfectional stage of devotional service, or the Paramahamsa stage of life, cannot be attained without being blessed by the dust of the feet of great devotees. It is never attained by tapasya, austerity, the Vedic worshipping process, acceptance of renounced order of life, the discharge of the duties of household life, the chanting of Vedic hymns, or the performance of penances in the hot sun, within cold water, or before the blazing fire. In other words, Lord Sri Krishna is the property of his pure, unconditional devotees, and as such only the devotees can deliver Krishna to another devotee. Krishna is never obtainable directly. Lord Chaitanya therefore designated himself as the Gopi Bharata Dasa Dasa Dasani Dasa, or the most obedient servant of the servants of the Lord, who maintains the Gopi damsels at Vrindavan. A pure devotee therefore never approaches the Lord directly, but tries to please the Lord, servant of servants, and thus the Lord becomes pleased, and the devotee then only can relish the taste of the tulsi leaves stuck to his lotus feet. In the Brahma Samhita, it is said that the Lord is never to be found by becoming a great scholar of the Vedic literatures, but he is very easily approachable through his pure devotion. In Vrindavan, all the pure devotees pray for the mercy of Srimati Radharani, the pleasure potency of Lord Krishna. Srimati Radharani is a tender-hearted feminine counterpart of the Supreme Whole, resembling the perfectional stage of the worldly feminine nature. Therefore, the mercy of Radharani is available very readily by the sincere devotee, and once she recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotee's admittance in his association. The conclusion is, therefore, that one should be more serious about seeking the mercy of the devotee than that of the Lord directly.
And by doing so, by the goodwill of the devotee, the natural attraction for the service of the Lord will be revived. Chant. हरे कृष्ण। तो आज हमने श्रील प्रभुपाद से दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक पर आज क्लास सुना। प्रभुपाद शुरुआत में पूछ रहे थे कृष्ण कृष्ण भावनामृत का विकास, इसका अर्थ क्या होता है? अगर कोई कहता है मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या होना चाहिए? हमारी मटेरियल डिज़ायर्स कम हो रही है तो इसका अर्थ है हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं बोला था यहाँ पर। हाँ, अर्थ अनर्थ। हाँ, अगर जो अनर्थ है वो निकाले जाते हैं वो यूजलेस थिंग्स है, और जो अर्थ है वो मीनिंगफुल थिंग्स है। तो अनर्थ निकल जाते हैं तो जो अर्थ है वो हमारा कृष्ण कॉन्शियस डेवलप। अगर अनर्थ जाने का अर्थ है कि आप अभी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये पहला उसका लक्षण होगा प्रभुपाद। हरि बोल। दिस इज द टेस्ट। अगर किसी का कृष्ण भक्ति बढ़ रहा है, अभी प्रभुपाद ने टेस्ट का बात किया, पहले प्रभुपाद ने बात किया कि हाँ उसका अनर्थ जाना चाहिए, तो फिर टेस्ट बोला। क्या टेस्ट है? भक्ति परेशानुभावो विरक्तिर अन्यत्र स्यात्। पर ईश अनुभव, परेशान पर ईश अनुभव, परेशान नहीं, पर भक्ति परेशान, पर यस ही पर बिकम्स ईश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र स्यात्. So he becomes attached to the Lord and becomes detached to the unnecessary things. Artificial life is finished. हरि बोल। प्रभुपाद ने बोला किसी भी प्रकार का कृत्रिम जो चीजें हैं, आर्टिफिशियल चीजें, इमीडिएटली फिनिश्ड। कोई इंटरेस्ट नहीं इस भौतिक अननेसेसरी चीजों के अंदर। हाँ, और कौन सी है वो चीजें? अभी हमारा स्तर क्या है? हम भौतिक चीज़ों से बहुत आसक्त हैं। प्रभुपाद के 4 चीज़, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। नो इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स। तो प्रभुपाद कह रहे थे कर्मी जो इस दुनिया के हैं वो बहुत डरते हैं कृष्ण भावनामृत से, संस्था से। इस संस्था से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं इस संस्था से? हल्दर प्रिय प्रभु। प्रभुपाद कह रहे थे किस तरह से हम इस्कॉन के अंदर कहते हैं लोगों को कि आप मांस मत खाइए, शराब मत पीजिए। तो अगर मांस और शराब अगर बंद कर दिया तो सारे स्लॉटर हाउसेस, कसाई खाने और शराब के जो सब उनका इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगा। हम कहते हैं लोगों को कि नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। तो इनके जो भी बड़े बड़े संस्थान उन्होंने बना के रखे हैं वो सब बंद हो जाएगा, ब्रॉथल्स, क्लब्स, न्यूडीज। प्रभुपाद तो कह रहे थे कि ये सब वो चाहते हैं कि बंद ना हो, ताकि उनका बिजनेस चलते रहना चाहिए, उनको पैसा मिलते रहना चाहिए। इसलिए हमसे वो ईर्ष्या करते हैं और कहते हैं कि इस्कॉन को कैसा। हरि बोल। तो ये सारी जो गलत चीजें हैं, ये भौतिक चीजें हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं इन सब से कैसे निकला जा सकता है? कृष्ण भावनामृत से निकलता है। कृष्ण भावनामृत कैसे होता है? कृष्ण भावना भावित हो रहा है तो कैसे होना है? ऑल दीज थिंग्स विल गो बिकॉज ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। दैट आई वांट टू बिकम इमीडिएटली कृष्ण कॉन्शियस। क्या करना पड़ेगा इमीडिएटली कृष्ण कॉन्शियस बनने के लिए? प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज को कोट किया और बताया कि मही असम पाद रजोभिषेक। अगर किसी शुद्ध भक्त के चरणों की रज अगर हम अपने सिर पे ले लेंगे तो तुरंत ही कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। Immediately one becomes freed from all these unnecessary demand, unnecessary ये सारी चीज़ें जो लगा के बैठ, सबसे कैसे हो जाएगा? एक भक्तों, किसी शुद्ध भक्त के चरणों की रज को प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद ने इसको लेक्चर में नहीं समझाया, लेकिन अगर इसको बार बार अगर हम ऐसा सुनते हैं कि भक्तों के चरणों का रज लेना है, इसका मतलब होता है कि भक्तों के चरणों के पास कौन बैठता है? नौकर बैठता है ना। द सर्वेंट सिट्स एट द फीट। और सर्वेंट क्या लेता है? आदेश लेता है।
तो एक शुद्ध भक्त के आदेशों को अपने जीवन में उसको पूरी तरह से पालना, इसका मतलब होता है एक शुद्ध भक्त के चरणों का रज लेना। हरि बोल। दो प्रकार के भागवत कौन है? एक जो भागता है दो प्रकार के भागवत कौन है? एक श्रीमद् भागवतम मतलब बुक, और दूसरा प्योर डिवोटी। एक बुक भागवत और एक प्योर डिवोटी। व्यक्ति भागवत। वो व्यक्ति भागवत कैसे बनता है? भागवत, वो व्यक्ति भागवत कैसे बना? वो तो व्यक्ति था, वो भागवत कैसे बना? वो जब दूसरे भागवत से भागवत सुनता है या समझता है। नहीं, बुक भागवत से व्यक्ति भागवत बना। हरि बोल। प्रभुपाद ने 3 उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी का, जिन्होंने उस ब्राह्मण को डांटा। फिर कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को बोली, और फिर प्रभुपाद ने कहा बाल गंगाधर तिलक को गीता नहीं समझी कभी। इन तीनों से प्रभुपाद ने क्या निष्कर्ष निकाला? 3 उदाहरण दिए एक एक करके, फुल एक्सप्लेनेशन। लोकेश्वर कृष्ण बताएं। प्रभुपाद ये समझा रहे थे कि फिलोसफर कांट अंडरस्टैंड भगवत गीता, ओनली थ्रू द डिवोशन वी कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता। दैट्स व्हाई प्रभुपाद गिव 3 एग्जांपल्स। ठीक है, वी कैन ओनली, श्रीमद् भागवत हो या भगवत गीता हो, ये कैसे समझा जा सकता है? एक भक्त के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे स्वयं भगवान बोले, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने क्या बोला? भागवत पढ़े गया भागवत स्थाने। एक व्यक्ति भागवत से सुनो या स्वयं कृष्ण से सुनो, पर तिलक जैसे सुनोगे तो आपको नहीं समझने वाली, क्योंकि उसको भी नहीं समझी। और उसको क्यों नहीं समझी? क्योंकि वो व्यक्ति भागवत के पास नहीं गया, एक भक्त के पास नहीं गया। नॉट अ स्कॉलरली अप्रोच, बट गो टू अ डिवोटी। हरि बोल। फिर प्रभुपाद ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम में थे, दक्षिण भारत में थे श्रीरंगम में, तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण को, वो पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, अशिक्षित था, उसको पढ़ना नहीं आता था, पर फिर भी क्यों पढ़ता था? इलिटरेट बट स्टिल रीडिंग। प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी चीज बताई, क्यों पढ़ता था? That Brahmana was instructed by spiritual master to read, so that's why he was reading. Although he was illiterate, he could not understand, but still he was reading the pages because he was instructed by spiritual master. तो उसको पढ़ना नहीं आता था, बाकी लोग उसका उपहास करते थे, उसके बाद भी पढ़ता था रोज। पढ़ता क्या था? सिर्फ देखता था, पन्ने पलटता था और देखता था। प्रभुपाद कह रहे, सी प्रभुपाद ने क्या बोला? मैं पढ़ता हूँ। He was taking the book and simply seeing. सिर्फ गीता खोल के देखता था और कुछ नहीं करता था, और सब लोग उसका उपहास कर रहे हैं, हे ब्राह्मण क्या पढ़ता है, क्या समझा तुझको? वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता था। इतना होने के बाद भी रोज पढ़ता था। क्यों? प्रभुपाद ने बोला उसका एक गुण था, ही कुड नॉट रिफ्यूज द ऑर्डर ऑफ गुरु महाराज। ये असली चीज थी। ये भागवत को सुना, भागवत ने जो बोला, ऐसा लगता है अरे मेरे लायक नहीं बोला, मुझे पढ़ने को नहीं आता, ये क्या बोल रहे हैं? सिर्फ भागवत को सुना तो अभी भगवद्गीता समझ गई। जस्ट बाय हियरिंग, लिसनिंग टू भागवत एंड व्हाट इज भागवत सेड, ऐसा कुछ जो मैं नहीं कर सकता फिर भी कर रहा हूँ, इसका मतलब गीता समझ जाएगी, क्योंकि एक भक्त भागवत को सुन ली। हरि बोल। तो महाप्रभु ने ब्राह्मण को पूछा, अरे तू रोता क्यों है? बोले समझती नहीं ना, है ना, ऐसे ही कारण था, मेरे को समझती नहीं गीता इसलिए रो रहा हूँ। क्यों रो रहे थे? है ना, वो खरीद ली थी मैराथन में और कुछ समझ नहीं रहे इसलिए रो रहे। क्यों रो रहे थे? ठीक है, पवन प्रभु को दो, वो बताएंगे क्यों रोते। हम भी रोते हैं, असाइनमेंट्स लिख लिख के रोते हैं। यस पवन।
वो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि ये गीता पढ़ना तो आता नहीं है, पर गुरु महाराज ने कहा है। तो जैसे ही मैं गीता हाथ में लेता हूँ तो जो कवर पेज पे दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो वैसे तो अर्जुन ने भगवान की सेवा करनी चाहिए, पर भगवान इतने भक्तवत्सल है कि वो अर्जुन के ड्राइवर बन चुके हैं और वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत रोना आता है। कृष्ण की ये महानता देख कर के, इतने महान है भगवान, अपने भक्त की सेवा करने को इतने आतुर हैं, मुझे रोने को आता है। हरि बो हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिर महाप्रभु ने बोला तुम्हारा भगवत गीता पढ़ना सफल हो गया। रोने के कारण हम सब भी रो लेते, क्या प्रॉब्लम है? उनके रोने में कुछ खास था जो महाप्रभु ने पकड़ लिया। क्यों रो रहे थे? महाप्रभु ने बोले तुम्हारा गीता पढ़ना सफल हो गया, बिकॉज यू हैव कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग। अन्वय प्रभु ऐसे धीरे से हाथ खड़ा कर रहा है। इस अन्वय प्रभु तक भेजिए। महाप्रभु उनको बोले कि यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ भगवद गीता। हाँ, वो क्या है सर? कि पूछ रहे थे। हाँ, सो कि टू सर क्या था एसेंस ऑफ भगवद गीता? क्या समझ गया उनको कि गीता लेके रोना चाहिए? मन मना भव मद भक्तो, जो ठीक है, श्लोक कोट कर रहे हैं आप, क्या था लेकिन व्हाट इज द एसेंस ऑफ, ये वाली चीज तुमने समझ ली। रोने से कैसे समझ गए? महाप्रभु को समझा कुछ, क्योंकि रो रहे हैं इसका मतलब आपने ऐसा कुछ समझा है। क्या था? ठीक है, श्वेता मंच। A devotee wants to serve Krishna, but Krishna loves to serve his devotee. नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। क्या था? विपुल प्रभु। maybe से अंदर शुरू हो रहा है कि जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो ये नहीं कंसीव कर पाते कि एक दो हाथ दो पैर दो वाला आदमी भगवान भी हो सकता है। एंड नहीं, दो हाथ दो पैर तो हम भी सब भगवान हैं क्या फिर? और वो कृष्ण एक व्यक्ति है, ये तुम समझ गए। कृष्ण इज अ गॉड, इज अ पर्सन। बड़े बड़े मायावादी भी नहीं समझ पाते। कृष्ण बोल रहे मन मना भव मद भक्तो, पर वो ये समझ नहीं पाते। क्योंकि तुम रो रहे, इसका तो समझ गया कृष्ण व्यक्ति, भगवान व्यक्ति है, और भगवान क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, और तुमको अश्रु आ रहे हैं क्योंकि तुमको ये साक्षात्कार हो गया कि भगवान एक व्यक्ति हैं। इसलिए तुम्हारा गीता पढ़ना सफल हो गया। योर स्टडी ऑफ गीता इज सक्सेसफुल, भगवद गीता इज सक्सेसफुल बिकॉज योर रीडिंग ऑफ भगवद गीता इज परफेक्ट। प्रभुपाद कहते हैं द स्कॉलर्स विल से ओ कृष्ण व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मन है, वो कृष्ण के अंदर ब्रह्मन है। उस दे के नॉट कंसीव दैट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ कैन बिकम अ पर्सन। एक व्यक्ति है भगवान। हरि बोल। मे बी हाँ, श्री प्रभुपाद कह रहे थे कि ये शरीर नश्वर है, इसको खत्म होना है एक दिन। कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, वो भी नहीं पता। पर इसमें से एक सबसे बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं शरीर के साथ। कारण क्या कर सकते हैं? वी कैन अचीव अ ग्रेट सक्सेस। प्रभुपाद कह रहे थे क्या कर सकते हैं? ग्रेट सक्सेस अगर इस मनुष्य जीवन में ये कर लिया तो क्या कर सकते? प्रभुपाद ने कहा। चैतन्य प्रभु आंसर देंगे? नहीं देंगे? ठीक है। Taking the dust of the lotus feet of the pure devotees. Prabhupada बोला taking the dust of the lotus feet of the pure devotee, simple thing. प्रभुपाद बोलते ऐड करें simple thing, इतना कर लो बस। एक शुद्ध भक्त के चरणों का रज ले लो, ये मनुष्य जीवन का सफलता है। वैसे तो नश्वर है, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, but to get the dust of the lotus feet of the Bhagavat, simple thing. हरि बोल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये शरीर तो मरा हुआ है हमेशा, पर ये जिंदा क्यों दिखता है? लगता तो जिंदा है।
पर ये हमेशा मरा हुआ है, प्रभुपाद कहते हैं। तो पहले मरा हुआ क्यों बोला और फिर जिंदा क्यों दिखता है? जीवित क्यों, जिंदा मतलब जीवित जीवित क्यों दिखता है? और कोई पहले बताना मरा हुआ क्यों है? हमेशा मरा हुआ है, प्रभुपाद कहते हैं इसको। वाई इट ऑलवेज डेड बट अपीयर्स टू बी लिविंग, क्यों? और कोई आंसर नहीं, आश्चर्य गोपाल प्रभु आंसर नहीं, क्योंकि वो आत्मा की वजह से वो नहीं, पहले वाई इज इट डेड? क्योंकि वो प्रॉपर देख रहे डेड है। आइंस्टीन का उदाहरण दिया प्रभु, क्योंकि वो हड्डियों और मांस से बना हुआ एक बैग है, एक थैली है, केवल हड्डी और मांस और इस खून से बना थैली ले लो, एक थैली में डाल दो उसको, देखो आइंस्टीन निकलता है कि बाहर प्रभुपाद करे थे। तो ये केवल थैली है, इसलिए हमेशा मरा हुआ है। लेकिन जीवित क्यों लगता है? आत्मा की वजह से। हाँ, क्योंकि आत्मा वहां पर है उस शरीर में, इसलिए वो जीवित जैसा प्रतीत होता है। हरि बोल। फिर आखिरी प्रश्न आज का, प्रभुपाद ने कहा दिस टेम्पल मीन्स एन अपॉर्चुनिटी। ये मंदिर किस लिए एक अवसर है? किस चीज का अवसर दे रहे हैं हम उनको सबको? क्या अवसर है इस मंदिर में? क्या प्राप्त होता है? मुकुंद प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा। तो अपने जो भी सेंसेस है, हर सेंसेस को एंगेज करने के लिए मंदिर में सुअवसर मिलता है। जैसे भगवान को ऑफर किए हुए फ्लावर्स, भगवान के दर्शन ले सकते हैं। अगर कोई कलीग भी आया तो भगवान को ऑफर किए हुए फ्लावर्स उनको स्मेल करने को देते हैं। तो अपने जो भी सेंसेस है, सभी सेंसेस को हरे कृष्ण महामंत्र बोला प्रभु, कान है तो हरे कृष्ण छोड़ा नहीं, प्रभु ने महामंत्र को पकड़ के रखा। यस यस। सो कान से हरे कृष्ण महामंत्र सुन सकते हैं और सभी सेंसेस को एंगेज कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, और जैसे ही कृष्ण भावना भावित हो गए, अवर लाइफ इज सक्सेसफुल। ये मंदिर अवसर प्रदान करता है हर किसी को अपना जीवन सफल करने के लिए। हरि बोल। जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय प्रभुपादा। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।